नमस्कार साथियों। फ्रेडरिश ईबर्ट स्टिफ्टन ने 2014-16 के बीच एक प्रोजेक्ट चलाया बिग ग्रीन, जिसके अंतर्गत हमने देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग ग्रीन लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स चला रहे थे उनसे बात की, उनके इश्यूज को समझने की कोशिश की ताकि उनके प्रोजेक्ट को हम स्केल अप करने में कंट्रीब्यूट कर सकें। उस दौरान हमने फील्ड वर्क में जो जो अनुभव किया, उन अनुभवों को ही शब्दबद्ध करने की कोशिश है इस कविता में, जिसका नाम है हरा क्या है, व्हाट इज ग्रीन। धनक के 7 रंगों में हरा एक रंग है। धनक के 7 रंगों में हरा एक रंग है। हरे के रंग कितने हैं मैं तुमसे क्या कहूं। धनक के 7 रंगों में हरा एक रंग है। हरे के रंग कितने हैं मैं तुमसे क्या कहूं। कहीं गुमनाम से एक गांव में गोमूत्र का डिब्बा लिए उघड़े बदन जो खेत के भीतर खड़ा है वो हरा है। कंधे से कंधा जोड़कर अपने हकों के वास्ते जंगल किनारे जो महीनों से अड़ा है वो हरा है। कई मील तक चट्टान की छाती से पानी खींचकर तपती दोपहरी पीठ पर बच्चे को बांधे आम के पौधों को जो भी सींचता है वो हरा है। अनछुए जंगल में देवों के भयंकर कोप से बचने को झुक झुक हर कदम पे जो भी कचरे बीनता है वो हरा है। युग युगों से नीलगिरी के जंगलों में शहद की मधुमक्खियों की खोज में जो निरंतर चल रहा है वो हरा है। अपने पसीने से जो धरती सींचकर फूलों के खिलने की लेकर आस धूप में लाचार सा कुम्हला रहा है वो हरा है। हमारी बस्तियों को साफ करता बोझ कूड़े का जो कांधे पर उठाए उन घरों के सामने से जा रहा है वो हरा है। खेत की पकती फसल में जो भी पीला है वो हरा है। खेत की पकती फसल में जो भी पीला है वो हरा है। नदी के स्वच्छ जल में जो भी नीला है वो हरा है। भला यह कौन कहता है हरा बस रंग है। भला यह कौन कहता है हरा बस रंग है। हरा तो ढंग है इस जहां में जिंदा रहने का। किसी के आंख का आंसू जो पोछे वो हरा है। किसी के घाव पे मरहम लगाए वो हरा है। हरापन इस धरा के सारे मर्जों की दवाई है। हरापन इस धरा के सारे मर्जों की दवाई है। खुदा ने जिस कलम से जिंदगी की कथा लिखी, हरापन उस कलम की रोशनाई है। हरापन जिस्म भी है, हरापन रूह है। हरापन जिस्म भी है, हरापन रूह है। अगर सैलाब आए या कश्ती नूह है। हरे की बात मत पूछो, हरापन शायरी है। हरे की बात मत पूछो, हरापन शायरी है। हरापन जिंदगी है, हरापन हर खुशी है। हरापन इस जहां में उस खुदा की बानगी है। हरापन नूर है, चमक भरपूर है। जहां जो कुछ हरे से दूर है खुदा से दूर है। हरापन एक खुशबू है, हरापन एक जादू है। हरापन आशिकों की गुफ्तगू है। सनसनाते शोर में हरापन शांति है। सदियों से सड़ती बजबजाती व्यवस्था में हरापन क्रांति है। जहां के इस बियाबा में हरापन गांव अपना है। जहां के इस बियाबा में हरापन गांव अपना है। हरापन एक हकीकत थी, हरापन एक सपना है। चलो कुछ यूं करें मिलकर हरा फैले धरा पर। चलो कुछ यूं करें मिलकर हरा फैले धरा पर। ये जो कुछ द्वीप बिखरे हैं हरे के, इन्हें विस्तार का आधार दें। चलो हम आज द्वीपों को बढ़ाकर महाद्वीप का आकार दें। चलो हम आज द्वीपों को बढ़ाकर महाद्वीप का आकार दें। Hello everyone. Today I'd like to share a Niddish folk tale with you. So here goes the story of Joseph's new overcoat. There was once a little boy called Joseph.
And on his 4th birthday, his grandfather had gifted him a special thing. Joseph's grandfather had gifted him a handmade overcoat. And it was special because Grandpa had made it with his own hands. Yes, Joseph's grandfather was a tailor, and he had a tailoring shop in the city. Joseph loved visiting his grandfather's tailoring shop. He would always be curious, looking at all the fabric, the color, the threads and needles, and so many things strewn all over in the tailoring shop. And Joseph loved his grandfather dearly, and the overcoat meant the world to him. So Joseph wore the overcoat everywhere he went, to the school, to the market, to the playground, just almost everywhere. He could never get tired of wearing the overcoat. Soon enough, the 4-year-old Joseph grew up into a 8-year-old, 10-year-old boy, and his jacket would barely fit him. He was so disappointed that the jacket could not be worn any further. His mom would say, "Joseph, your coat looks worn out and old. Why don't you give it away or throw it away?" But Joseph did not want to part with the overcoat because it was a gift from his grandfather. So one day, Joseph and his mother went to Grandpa's tailoring shop and gave the coat to the grandfather. The grandfather took a proper look at the overcoat, and then he took a pair of scissors and a needle and thread. He cut up a little on the left sleeve and on the right sleeve. And he took a needle and thread and gave it a little stitch. And now, what did Joseph have here? The overcoat had now become a little jacket. Yes, a jacket that Joseph could wear. And so Joseph was happy with all the transformation that the overcoat had gone through, and now that he could wear a jacket. And as usual, Joseph wore the jacket everywhere he went. A few years later, Joseph had grown up into a teenager, and the jacket no longer fit him anymore. But he didn't want to let go of his jacket because it was a gift from his grandfather. He visited Grandpa's tailoring shop again and gave him the jacket. Grandpa was a little older now, used a walking stick, but was always passionate about stitching and his tailoring shop. So he looked at the jacket and he took a pair of scissors and needle and thread and he began to cut the jacket. And soon enough, the grandfather had stitched up 4 beautiful ties for Joseph. Joseph looked at the ties and it said, "Wow, what a transformation. I can wear it outside. I can wear it to the school. I can wear it with my shirt. And I have 4 of them. That's wonderful." So Joseph was very happy with the transformation that the jacket had made into 4 ties. A few years later, Joseph had grown older and the ties had become shorter. Yes, he went back to his grandpa's tailoring shop. Grandpa had become very old, but never lost interest in stitching something new. So he took a pair of scissors, a needle and a thread, and transformed the ties into badges that Joseph could wear on his t-shirt or on his bag or just anywhere. Joseph was so happy that the little overcoat that he had was having a tremendous journey all through these years and had survived so many years. And from an overcoat, it had become into a
badge. He just loved the idea of how one fabric transformed into many such fashionable outfits. I hope you like the story. Thank you.